Today, we are going to discuss the Cambridge reading passage, Nature or Nurture. First 14 to 19 questions are, which paragraph contains the following statements? You have to write the paragraph from where these statements are taken. First question is, a biological explanation of the teacher-subject behavior. टीचर-सब्जेक्ट बिहेवियर का बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन. ये स्टेटमेंट पैराग्राफ F से ली गई है. पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइंस में, one's first inclination might be to argue that there must be some sort of built-in animal aggression instinct that was activated by the experiment, and that Milgram's teacher subjects were just following a genetic need to discharge this pent-up primal urge onto the pupil by administering the electrical shock. यहाँ पर aggressive instinct मतलब इसकी फितरत जो कि बाय बर्थ होती है, और दूसरा जेनेटिक नीड जो कि जीन्स में होती है, तो यहाँ बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्लियर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सप्लेनेशन मिलग्रम गेव द टीचर सब्जेक्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट का मिलग्रम ने जो एक्सप्लेनेशन दिया वो ए पैराग्राफ में मिलेगा. स्पेसिफिकली, मिलग्रम टोल्ड ईच वॉलंटियर teacher subject that the experiment was in the noble cause of education, and was designed to test whether or not punishing pupils for their mistakes would have a positive effect on the pupils' ability to learn. तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो एक्सपेरिमेंट क्यों किया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइडेंटिटी ऑफ द प्यूपल्स. प्यूपल्स की आइडेंटिटी, इसकी बात बी पैराग्राफ में हो रही है. The supposed pupil was in reality an actor hired by Milgram to simulate receiving the shocks by emitting a spectrum of groans, screams and writhings together with an assortment of statements and expletives denouncing both the experiment and the experimenter. Pupils को Milgram ने किस काम के लिए हायर किया था, यहाँ उसके बारे में बताया गया है. Next question is, the expected statistical outcome, उसके रिजल्ट का क्या डेटा आया. ये स्टेटमेंट आपको पैराग्राफ डी में मिलेगी. The psychiatrists felt that most subjects would not go beyond 150 volts, and they further anticipated that only 4% would go up to 300 volts. जो परसेंटेज यहाँ दी गई है, वो स्टैटिस्टिकल आउटकम है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जनरल एम ऑफ सोशियोबायोलॉजिकल स्टडी. सोशियोबायोलॉजिकल स्टडी का मकसद क्या है, ये आंसर आई पैराग्राफ में मिलेगा. लास्ट लाइन्स में, put another way, sociobiology is concerned with elucidating the biological basis of all behavior. Is concerned का मतलब, उसका aim. Next statement is, the way Milgram persuaded the teacher subject to continue. किस तरीके से Milgram, teacher subject को जारी रखने के लिए माना. ये statement आपको सी पैराग्राफ में मिलेगी. Many of the teacher subjects balked at administering the higher levels of punishment, and turned to Milgram with questioning looks or complaints about continuing the experiment. काफी सारे टीचर सब्जेक्ट ने हायर लेवल की पनिशमेंट की वजह से मिलग्रम को सवालों वाली नजरों से देखा. In these situations, Milgram calmly explained that the teacher subject was to ignore the pupils' cries for mercy and carry on with experiment. उसने बताया कि टीचर सब्जेक्ट को प्यूपल्स पर दया नहीं करनी, बल्कि एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करना है. If the subject was still reluctant to proceed, अगर सब्जेक्ट अभी भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, Milgram said that it was important for the sake of the experiment that the procedure be followed through to the end. उसने कहा, एक्सपेरिमेंट के लिए ये जरूरी है कि इसे एंड तक जारी रखा जाए. His final argument was, you have no other choice. You must go on. आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है, आपको इसे करना होगा. Next 20 to 22 questions are, choose the correct answer from 4 options. First question is, the teacher subjects were told that they were testing whether. इसका आंसर बी है. टीचर सब्जेक्ट को ये बताया गया कि वो टेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि पता लगे कि पनिशमेंट से लर्निंग में हेल्प होती है या नहीं. ए पैराग्राफ में, specifically Milgram told each volunteer teacher subject that the experiment was in the noble cause of education, and was designed to test whether or not punishing pupils for their mistakes would have a positive effect on the pupils' ability to learn. Next question is, the teacher subject were instructed to. उन्हें क्या करने के लिए कहा गया. D. Give punishment according to rule. In C paragraph, as the experiment unfolded, the pupil would deliberately give the wrong answers to questions posed by the teacher, thereby bringing on various electrical punishments, even up to the danger level of 300 volts and beyond.
Next question is, before the experiment took place the psychiatrists, experiment होने से पहले psychiatrists ने क्या किया? Answer is C. Underestimate the teacher-subject willingness to comply with experimental procedure. उसने टीचर सब्जेक्ट की एक्सपेरिमेंट को फॉलो करने की इच्छा का अंदाजा गलत लगाया. The psychiatrists felt that most subjects would not go beyond 150 volts and they further anticipated that only 4% would go up to 300 volts. ऐसा उन्होंने सोचा था. अब आगे ए पैराग्राफ में देखिए. What were actual results? Well, over 60% of the teacher subjects continue to obey Milgram up to the 450 volts limit. Next 23 to 26 questions are true, false and not given. First is not given. Next is, some people may believe that the teacher subject's behavior could be explained as a positive survival mechanism. कुछ लोगों का मानना है कि टीचर सब्जेक्ट बिहेवियर को पॉजिटिव माना जा सकता है. ये स्टेटमेंट ट्रू है. जी पैराग्राफ की स्टार्टिंग लाइंस में, an alternative to this notion of genetic programming is to see the teacher subject's actions as a result of the social environment under which the experiment was carried out. As Milgram himself pointed out, most subjects in the experiment see their behavior in a larger context that is benevolent and useful to society. Next question is, in a sociological explanation, personal values are more powerful than authority. Sociological explanation में पर्सनल वैल्यूज अथॉरिटी से ज़्यादा पावरफुल है. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. एच पैराग्राफ दिस इन दिस एक्सप्लेनेशन द सब्जेक्ट merges his unique personality and personal and moral code with that of larger institutional structure, surrendering individual properties like loyalty, self-sacrifice and discipline to the service of malevolent systems of authority. अथॉरिटी की सर्विस के लिए उन्होंने अपनी सारी पर्सनल वैल्यूज को कुर्बान कर दिया. Next question is, Milgram's experiment solves an important question in sociobiology. Milgram के एक्सपेरिमेंट ने सोशियोबायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. आई पैराग्राफ द प्रॉब्लम फॉर बायोलॉजिस्ट्स, साइकाइट्रिस्ट्स एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स इज टू सॉर्ट आउट. इज टू सॉर्ट आउट का मतलब अभी होनी बाकी है. तो स्टेटमेंट फॉल्स होगी. I hope this video is beneficial to you. If yes, then please like, share and subscribe to this YouTube channel. Thanks for watching.